এবং সমস্ত পিলে ভেরি গুড মর্নিং। আই থিঙ্ক সমস্তে ভাল ভাবে পিলে প্রিপারেসন করু প্রিপারেসন লেভেল মধ্য কাହିଁ উপরে থিব, কারণ পাখাপাখি 3 মাস হল তুম মানকর ক্লাস হয়ে সারানি। তো নিহতি ভাবে তুমি মানে ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଯଦି ପିଲେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଫଲୋ କରୁଛ, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛ, ରେଗୁଲାରଲି କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ, ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MCQ ତିଆରି କରିକି ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛ, ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଡ୍ ସିଟ୍ ହିଁ ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଥିଲି ମୋତେ 5 ମାସ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଦେବି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପିଲେ କହିଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲେ 5 ମାସ ଯଦି ତୁମେ ଡେଡିକେସନ୍ର ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଆସୁଛ, ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ମୋ ଭଏସ୍ ପିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି କି? ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଲେ ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କହୁଛି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟି ରହିଛି ପିଲେ, ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋ ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ତ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି BA/BD ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, CUCT ହେଉ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ୍ ଯଦି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯେ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସେସ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ତ କନସେପ୍ଟ India Act was passed by the British Parliament August 1935. British Parliament Act पिले August 1935 रे पास होइथिला। At that time, most important पिले Government of India 1935, it was divided into two separate act, namely गोटे होची पिले Government of Burma Act आ गोटे होची पिले Government of India Act. The Act provided the establishment of all India Federation of a new system of government for the province of the basic provisional autonomy. Most important देखो, most important concept तुम मानकर कोर्स होचे यार पिले तुम मैंने स्क्रीनशॉट मध्य नहीं परिबो, स्क्रीनशॉट नहीं कि आदिरो पिले क्वेश्चन तैयारी करिवो। मु तुम मानको पिले इंपोर्टेंट पॉइंट कहि दउची, तुम माने देखिबो ओनली बेंगल एंड पंजाब एंड हाड ए नॉन कांग्रेस मिनिस्टर्स। एटा पिले देखिबो, एटा तुम मानकर एग्जाम रे पचारे कि बेंगल एवं पंजाब हाड ए नॉन कांग्रेस मिनिस्टरीज। एटा देखि देखो पिले द टर्म ऑफ अ टू नेशन थ्योरी वाज ए फास्ट यूज बाय सर सैयद अहमद खां। एटा पिले देखिबो टू नेशन थ्योरी को पिले की यूज करथिले सर सैयद अहमद खां ड्यू टू 1867 हिंदू एवं उर्दू मानकर कंट्रोवर्सी 1867 रे सर सैयद अहमद नेशन थ्योरी को पिले प्रथम थर पे यूज करथिले। एटा पिले मन रख द आइडियोलॉजी दैट रीजन इज द मेन फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग the nationality of Indian Muslim was used by Muhammad Ali. He called it the awakening of a Muslim for the creation of a Pakistan. तो पाकिस्तान गठन पिले मोहम्मद अली जिन्ना को मुख्य भूमिका रही तुम मैंने पिले जानिथिबो। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटे पिले INC रहितला एवं INC रो लीडर्स माने जो माने रहितले वर अपसेट विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हैविंग पुल्ड इंडिया इनटू ए वार नहीं युद्ध भितर को जोटा कि पहले अगस्ट ऑफर अबाउट लॉर्ड लिनिथ गो हाड डिक्लेयर इंडिया टू बी एट वार विथ जर्मनी विदाउट कंसोलेशन। तो आम पे कह कि लॉर्ड लिनिथ गो जी रही सी कहले ना डिक्लेयर कले कि इंडिया कौन है ना जर्मनी सहित आटाच होगला, माने इंडिया पे कौन भी व्यू नहीं नी। ठीक अच्छे, France had fallen to the Axis power. The Allies were suffering many reverses in the war. There was also change of a government in Britain, and Winston Churchill became the British Prime Minister. एटा पिले मन रख 1940 मसीह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिले किए थे चर्चिल होते। Britain herself was in danger of being occupied by the Nazis, and the
light the INC substance its a stand. It is said that support for the war will be provided if power has a transfer to an. Then the Lithgow made a set of proposal called August offer. तो पिले एग्जाम रे पिले क्वेश्चन पचारिबो कि अगस्त ऑफर को पिले किए सेटअप करथिले एटा पिले क्वेश्चन पचारिबो तो पिले मन रखो भाइस रे लिथगो एटा पिले एग्जाम रे पचारे तो टर्म ऑफ अगस्त ऑफर पिले एटी रही टर्म टा साधारणतः पढ़ी दबो तुमे माने इंपोर्टेंट कोन रही सेटा देखिबा हाँ देख पिले the INC rejected the offer its meeting at Wardha in August 1940 तो INC अगस्त ऑफर को पिले रिजेक्ट करथिला एटा पचारियो पिले को मीटिंग रे पिले ना वार्धा टारे जो मीटिंग हेतिला अगस्त मास रे ठीक अछि फ्रॉम क्लोनिकल रूल तो सी चाहुतिले जे कंप्लीट फ्रीडम मिलु INC चाहुतिला जवाहरलाल नेहरू रिमार्क दैट द डोमिनियन स्टेटस एज ए डोनाल the initiated the individual satyagraha to affirm the right to free speech. The first three satyagrahis were Vinod Bhave, Nehru, and Brahman Dutt. All three were jailed. The satyagraha also started a march toward Delhi, which was called Delhi Cholo movement. Eta pile mone rakho ekor question pacharibo. After the failure of August offer, the British government sent the Cripps mission to India in a bid to garner Indian support for the war. तो पिले क्रिप्स मिशन को करागला ना अपॉइंटेड करागला जे इंडियन माने अगस्त ऑफर को मना कर देला ना तो तांकर कोन प्रायोरिटी रही छे सेटा को देखिया पे क्रिप्स मिशन को 1952 रे तुम मानकर पिले छाड़ी थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट हैला तो कहीं ना भारत जेहेतु तुम मानकर वर्ल्ड वार जॉइन करथिला तो सेति पे तो क्रिप्स मिशन पिले 1942 रे भारत को आसिला ठीक अछि देखि परछ पिले स्क्रीन रे 1942 रे भारत को आसिला इट वाज हेडेड बाय सर रिचर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स एटा पिले क्वेश्चन पचारे कि एहा को पिले नेतृत्व किए नेथिले ना सर रिचर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स पिले नेले नेतृत्व ठीक अछि एग्जाम रे पिले क्वेश्चन पचारिबो तापर पिले देखो for the first time the British government acclaimed India right to be a dominion. The proposal of giving freedom to the province to the separate union turned out to be a model for the country partition 1947. जदि पिले देखिबा ये जो क्रिप्स मिशन जो आसीतिला ता परवर्ती समय रे तुम मानकर क्वाइट इंडिया मूवमेंट संगठित हेतिला ठीक अछि तो कोन पई पिले ना सी चाहुतिले कि भारत को भाग भाग करिवे The proposal were seen as too radical by the British as by INC who wanted completely independence. The mission was rejected by INC, the Muslim League and other Indian group. The Hindu Mahasabha and the Liberal were against the right of a state to secede. तापर पिले कहिबा the Sikh objected because they thought any partition would leave Punjab in the hands of Pakistan. After the failure of mission Cripps returned to England and the Congress led campaign the Quiet India movement in August 1942. तो क्रिप्स मिशन फेरी गला परे तुम मानकर पिले 1942 रे क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हैला बुझि पारछ पिले क्रिप्स मिशन विफल करा गला तो सेवन पार्टीशन कथा कहले माने समस्त कोन कले ना विरोध कले तो सी फेरी अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जिगरे ठीक अच्छे नेटवर्क प्रॉब्लम हो पछर देखीदेव किसी प्रोब्लेम ना तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब देखिए पिले मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान ऑल्सो नोन एज अगस्ट क्रांति मैदान इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी डिलीवर हिज स्पीच मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो पिले कोटा ना मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान ऑल्सो नोन एज अगस्ट क्रांति मैदान ठीक अच्छे ये पिले मन रख Mahatma along with other leaders gathered here on August 8 and 9, 1942. Maidan also houses a monument as the tribute to the historical event. It was officially launched by the Indian National Congress INC led Mahatma Gandhi on August 9, 1942. The movement gave the slogan Quiet India or Bharat Chodo. ठीक अच्छे यहाँ तुम मानकर पिले कह स्लोगान टी क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे
एवं गांधी गेव द स्लोगन टू द पीपल डू और डाए, जोटा कि पिले एग्जाम पचारे कि डू और डाए पिले को मूवमेंट रे पिले दिया जायथिला। Within hours of the speech, almost the entire INC was imposed without trial. Several national leaders like Mahatma Gandhi, Abdul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel were arrested. तो यही सब कहया पर से मानको अरेस्ट करके दिया गला। The Congress was declared unlawful association, leaders were arrested and its office all over country were raided and their funds were frozen. The first of the movement was a peaceful with a demonstration and a procession. The peaceful protest was carried till Mahatma Gandhi release. The second half of the movement was a violent with raids and a setting fire at a post office, government building and a railway station. Lord Linlithgow adopted the policy of violence. तो पिले मन रख एटा फास्ट हाफ रे पिले शांतिपूर्ण उपाय होता, सेकेंड हाफ रे जेते पिले महात्मा गांधी गुड़ी महात्मा गांधी इन को नहीं गले तो अहिंसा वृद्धि पाइला। The Viceroy Council of Muslim Communist Party and American supported Britisher. After the arrest of a major leader, young Arun Asaf Ali presided over the AICC session despite several police warnings and a government notice for banning public procession and assemblies. A large crowd gathered at a Mumbai Gwalior Tank Maidan where Arun Asaf Ali hoisted the flag. तो पिले मन रख यहाँ हूँ तुम मोस्ट इंपोर्टाट अटे। ठीक अच्छे टोटाल पिले जिते मेजर लीडर मान को माने जेल को निया जाइतिला सेते पिले किए संभालतिले रे अरुण आसेफ अली। ठीक अच्छे एआईसीसी सेशन रे। तापर देखिबा मोस्ट इंपोर्टाट पिले हाँ इंडियन नेशनल आर्मी जोटा पिले आईएनए रु तुम मानकर पिले क्वेश्चन आसे एटा पिले देखो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए। The idea for Indian National Army INA was first convened in Malaya by Mohan Singh, an Indian officer of the British India Army, when he decided not to join the retreating British Army, instead turned to the Japanese for help. तो पिले जदि देखिबा पर्टिकुलरली यार पॉइंट गुड़िक इन 1942 आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर, मोहन सिंह फर्दर गॉट 45 WS into his sphere of influence. To July 1943, Subhash Chandra Bose reached Singapore and gave the rising war cry of दिल्ली चलो। ठीक अच्छे तो दिल्ली चलो बोली क्या सुभाष चंद्र बोस पिले डाकरा देथिले। नेताजी वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पिले मन रख इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रो प्रेसिडेंट होते एंड सून बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो तत्क्षणात पिले इंडियन नेशनल आर्मी रो से सुप्रीम कमांडर होते। हेयर ही गेव द स्लोगान जय हिंद एवं सेठी पिले सी कौन करथिले ना जय हिंद स्लोगान क्वेश्चन आसुची। जय हिंद स्लोगान किए कहते दिल्ली चलो पिले कौटी कहला एवं किए कहते INA 3 ब्रिगेज नेहरू ब्रिगेज। तो पिले मन रख सुभाष ब्रिगेज, गांधी ब्रिगेज और नेहरू ब्रिगेज एटा पिले तुमने मन रख INA रो 3 ब्रिगेज रही। द वुमेन्स विंग ऑफ द आर्मी वाज नेम्ड आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। INA marched toward Imphal after registering its victory over Kohima, but after Japan surrender in 1945, INA failed in its effort. तो जेहेतु पिले जापान ने तुम मानकर एटा रहिला तो जापान पिले तुम मानकर कौन हला ना अमेरिकार अमेरिका कौन कला जापान हिरोशिमा एवं नागासाकी रे पिले बम पकई देला अगस्त 6 एवं अगस्त 9 रे एवं जापान पिले ध्वंस विध्वंस हो गला। तो जेहेतु पिले जापान सत्ता हो आम कहीपर तो INA आमर पिले तार एफोर्ट रो विफल हो गला। ठीक है अंडर सच सर्कमस्टांस सुभाष वेंट टू ताइवान एंड फर्दर ऑन हिज वे टू टोक्यो। ही supposedly died on August 18, 1905 in a plane crash. तो पिले 1945 रे तुम मानकर कौन है अगस्त 18 तारिख रे तुम मानकर सुभाष चंद्र बोस ट्रायल ऑफ द सोल्जर ऑफ INA वाज हेल्ड एट ए रेड फोर्ट दिल्ली। तो मन रख पिले ट्रायल ऑफ सोल्जर्स INA वाज हेल्ड रेड फोर्ट कौटी पिले दिल्ली रे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं बुल्हाभाई देसाई and Tej Bahadur Safru fought the case of the soldier.
fighter of India, popularly known as Netaji, was born in January 23, 1897, Kotak. He passed the Indian Civil Service Examination 1920, but refused to take service since he did not want to serve the British government. He left on a Gandhiji call of a non-corporation movement. ठीक अच्छे तो सिविल सर्विस पास करते कि से जाऊन ब्रिटिश मान अधीन रही कौन चाकरी करने बोस जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1921. ही ऑल्सो स्टार्टेड पेपर कॉल्ड स्वराज. तो पिले स्वराज न्यूज पेपर से स्टार्ट करते एग्जाम रे पिले तुमको बारंबार पचारे. He was a president of All India Youth Congress, also the secretary of Bengal State Congress. 1924 पिले he became the CEO of the Calcutta Municipal Corporation. मन रखो पिले 1930 रे become the mayor of Calcutta. मन रखो. He founded Independence of Indian League with Jawaharlal Nehru. इटा मध्य पिले most important अटे. In 1930 he was ने पिले गुजरात रो ताको INC से प्रेसिडेंट होइतिले. 1939 ने पिले से परित्याग करथिले. ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 जोटा कि पिले मोस्ट अटे फॉरवर्ड ब्लॉक को पिले से गठन करथिले. इन 1941 ही एस्केप टू बर्लिन एंड मीट हिटलर. से खसिकी पळैथिले इंग्रेज माने ताको बंदी करथिले खसिकी पळैथिले एवं हिटलर को साक्षात कर. 1943 took charge of Indian National Army in Singapore and set up the Indian Provisional Government there. He gave a war cry of Delhi Chalo. तापर पिले एटी रही ही address महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन मोस्ट इंपोर्टेंट अटे. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन पिले कि कहते सुभाष चंद्र बोस कहते एवं दिल्ली चलो ता सहित पिले से जय हिंद स्लोगान मध्य देइथिले. बोस ऑथर द बुक ऑफ द इंडियन स्ट्रगल. जो इंडियन स्ट्रगल गोटे जो पिले बुक रही तार ऑथर मध्य तुम मानकर सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपोर्टेंट अटे. एवं आम पिले कहीपर दुखद घटना जोटा रही है अगस्ट 18 1945 मसीह पिले मृत्युवरण करते पाखापाखि आम कहीपर 48 बयस से मृत्युवरण करते प्लेन क्रैश रे. ठीक अच्छे अगस्ट 18 तारिख में एटा पिले मन रख. He coined the term Joy Hind. His charisma and a powerful personality inspired many people into the freedom struggle and continue to inspire Indians. He was called Netaji. ठीक है. तो से जिन गुड़ पिले ये देगी एगुड़ पिले तुमने पढ़ीदब केमितिका भाव में रोल रही सुभाष चंद्र बोस जिन फौज जो रही जय हिंद डाकरा देते सब पिले रही यार स्क्रीनशॉट नहीं तुमने पढ़ी पार. ठीक अच्छे. तापर पिले देख कैबिनेट मिशन on 15 March 1946 Lord Otley PM of England जीतले made a historic announcement in which the right to self determination and the framing of a constitution of India were considered. Co-sequentially, three members of the British cabinet, Patrick Lawrence and Stafford Crowley and A.B. Alexander, were sent to India known their cabinet mission. तो कैबिनेट मिशन पिले 1946 रे मार्च 15 तारिख रे भारत आसीथिले. आमे कहि परे पिले विंस्टन चर्चिल सॉरी तुम मानकर लॉर्ड ऑटली थिले तुम मानकर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड रो. तो सी तांको द्वारा गठन करा जायतिला. तीन जण पिले थिले. ठीक अच्छे. मेन फीचर ऑफ कैबिनेट मिशन पिले कौन थिला कैबिनेट मिशन नो मेन फीचर कौन थिला ना देखो प्रोविजन ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंस ऑफ पोजेसेस देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन इंडिया कंपेरिजिंग बोथ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट. यूनियन would remain charge of only foreign affairs, defense and leaving the residuary power to be vested in the province. Proposing of interim government which would remain in office till a new government was elected on the basis of the new constitution framed the Constituent Assembly. Rejection of the demand for a full-fledged Pakistan. Both the Muslim League and the Congress accepted the plan. तापर पिले consequently election were held in 1946 for the formation of a constituent assembly. Congress secured 205 out of 214 general seat. The Muslim League got 73 out of 78 Muslim seat and Jawaharlal Nehru 2 September 1946.
तो यही सब पिले प्लान रही जोटा कि नूतन सेपरेट तुम मानकर मुस्लिम मानक एवं हिंदू मानक एवं कांग्रेस जो पिले रही कांग्रेस 214 खंड जेनेल सीट रू 205 सेमतिका मुस्लिम लीग पिले 78 रू 73 सीट पाइला ये टाइप रही तापर पिले देख माउंटबेटन प्लान जोटा रही मोस्ट इंपोर्टाट तुम मानक ऑन फेब्रुआरी 1947 in the House Common the definite intention to affect the transference that power utterly decided to send Lord Mountbatten and a viceroy to India. Lord Mountbatten, armed with his vast power, became India viceroy on 24 March 1947. Partition of India and the creation of Pakistan appear inevitable to him. तो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो माउंटबेटन प्लान को द्वारा 1947 में इंडिया को भागवा करा गई पाकिस्तान तुम मान सृष्टि होता एवं एपर्यंत भी से ब्रिटिश मैंने तो जहाँ शासन कले कले पिले तो भाग भाग करदे गले एवं डिस्प्यूट आम रही इंडिया और पाकिस्तान पिले कलह लगी रही आतंकवादी पठाऊँ आम देश क्षयक्षति करुँचे टाइप पिले यात्रा चली ठीक अच्छे चलू ब्रिटिश मैंने बहुत चलाक पिले आफ्टर एक्सटेंसिव कंसुलेशन लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 3 जून 1947 प्लान कले कि भाग भाग करेंगे भारत को द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अल्टीमेटली अप्रूव द माउंटबेटन प्लान ये समस्त पिले एक्सेप्ट करदे माउंटबेटन प्लान को ठीक अच्छे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 British government accorded formal approval the Mountbatten plan and enacting the Indian Independence Act 18 July 1947 जोटा पिले यार साइलेंट फीचर गुड़िक कौन थिला इंडिपेंडेंस एक्ट रो देखो पिले पार्टीशन ऑफ द कंट्री टू इंडिया इंटू पाकिस्तान तुमको दी भाग 15 अगस्त 1947 ने भारत स्वाधीन है तो पाकिस्तान पिले 14 अगस्त 1947 में रही ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर ऑल पावर टू दिस डोमिनियंस ए बाउंड्री कॉम्बिनेशन a boundary commission would demarcate the boundary of the province of Punjab and Bengal. Act provide for a transfer power the Constituent Assembly the two dominions which will have the full authority to frame their respectively constitution. Redcliffe Boundary Commission drew the boundary for separate India and Pakistan exam रे पिले पचारुची रेडक्लिफ जो बाउंड्री रही भारत एवं पाकिस्तान को पिले अलग करुचे 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड 14 अगस्त पाकिस्तान came into existence as a two independent state ठीक अच्छे 15 अगस्त 1947 मसीह भारत स्वाधीन होता है अगस्त 14 तारिख रे पाकिस्तान स्वाधीन होता है दुईटी स्वतंत्र राष्ट्र पिले गठन कर तुम मानकर क्वेश्चन पचारुची लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फास्ट गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल पिले लॉर्ड माउंटबेटन होते कौटार पिले ना इंडिपेंडेंट इंडिया रो एटा एग्जाम रे पचारुची हुआर मोहम्मद अली जिन्ना जी कि तुम मानकर पिले जो पाकिस्तान रही केम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ठीक अच्छे लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एवं मोहम्मद अली जिन्ना पिले प्रथम गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस The Indian Independence Act 1947 gave a princely state option to accede to the newly born dominions India for Pakistan or continue as independent sovereign state. देखो पिले at the time more than 500 princely states have covered 48% of the area of independence India and constituted 28% of its population. जदि पिला में देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कथा देखो ये रही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर विथ द असिस्टेंस ऑफ पीवी मेनन द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जी की थिले पीवी मेनन वाज ए गिवन प्रोमिडेबल टैक्स इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट एवं आम पिले कहीपर ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी फोर्सेस जोटा कि पिले आम ए पेमेंट रही काश्मीर प्रसंग जूनागढ़ प्रसंग एगुड़ा सब रही पिले हाँ कौन कौन पिले पॉइंट गुड़िक रहा तुम मान पॉइंट गुड़िक आम कवर करदे आई थिंक आज नाइट रे पिले कवर करवा ये सब पॉइंट गुड़िक ठीक अच्छे इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक कौन सब रहा तुम मानकर इंडियन नेशनल मूवमेंट
तो परवर्ती समय पिले आम कभर करवा तुम मानकर जो भाइसरे और गवर्नर जनरल रहिले अबाउट पिले कभर करवा जोटा कि इंपोर्टाट रही डिटेल्स जान तापर पिले 10 तारिख दिन आज वेल एज पिले आम जमी प्लानिंग रही है 10 मार्च रे तुम मानकर 5E380 MCQ क्वेश्चन करा तो सहीटा पिले माराथन क्लास करा तो थैंक यू सो मच पिले जय जगन्नाथ।